Radhe Radhe to all. Today we are supposed to start 10th standard, chapter number 2, Polynomial. Now, polynomial comprise of variable, constant and degree. For example, here we have small space, so I am writing it here. If I write 3x square, so 3 is known as constant, x is known as variable and 2 is known as its degree. Now, if we talk about polynomial, we have three types of polynomial, that is linear polynomial, quadratic polynomial and cubic polynomial. Again, we have three types of polynomial: linear polynomial, quadratic polynomial and cubic polynomial. Linear polynomial means which have degree 1 is known as linear polynomial. Which have degree 2, highest degree 2 is known as quadratic polynomial, and which have highest degree 3 is known as cubic polynomial. Here we can write it down at last, that is highest degree. Here it is 1, 2 and here it will be 3. Now, general form of linear polynomial is p of x is ax plus b. I repeat it again. The general form of linear polynomial is ax plus b. Same way, the general form of quadratic polynomial is p of x is equals to ax square plus bx plus c. I repeat it again. The general form of quadratic polynomial is ax square plus bx plus c. The general form of cubic polynomial is p of x is equals to ax cube plus bx square plus cx plus d. I repeat it again. Cubic polynomial general form is p of x is equals to ax cube plus bx square plus cx plus d. Now, zeros का मतलब होता है सॉल्यूशन. बेसिकली हम सॉल्यूशंस को पॉलिनोमियल की लैंग्वेज के अंदर जीरोस कहते हैं. तो अगर हम कहेंगे यहाँ पे हमारे पास कितने जीरोस हैं, तो लीनियर पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 1 0, क्यूबिक पॉलिनोमियल हैव एट मोस्ट 2 zeros एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल हैव एट मोस्ट 3 zeros. ये हमने वर्ड एट मोस्ट क्यों लगाया है, ये चैप्टर के आगे हम बताएंगे आपको. अब आगे जीरोस. लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस आर डिफाइंड एज अल्फा, quadratic polynomial zeros are defined as alpha and beta, and cubic polynomials are defined as alpha, beta and gamma. Sum of zeros. Now if I talk about sum of zeros, क्योंकि यहाँ पर एक ही zeros है तो यहाँ पे डैश किया है. Sum of zeros is nothing but minus b upon a. It is known as negative b upon a. Negative b is what? It is coefficient of x and upon a is coefficient of x square. Similarly, cubic polynomial sum of zeros, that is alpha plus beta, is minus b upon a. That is nothing but coefficient, negative coefficient of x square upon upon x cube, coefficient of x cube. Now product of zeros. Here product of zeros, here also because it is 1, so dash. Here alpha into beta is c upon a. Here alpha, beta and gamma, that is minus b upon a. Sum and product, here dash, here alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma, that is defined as c upon a. Equation. Linear polynomial का कोई इक्वेशन नहीं बनाते हैं. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन बनाया जाता है. तो where we write k in the bracket x square minus alpha plus beta bracket close x plus alpha into beta, where k is not equals to 0. Similarly, for cubic polynomial, equation is p of x is equals to k into bracket x square minus alpha plus beta plus gamma bracket x square plus alpha beta, beta gamma plus alpha gamma into x minus alpha beta gamma. Now, if I talk about graph, this is one of the most important thing about graph. लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ हर बार एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक पैराबोला होता है, पैराबोला. एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक कर्व होता है. नाउ नेक्स्ट, इंटरसेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस. So this is one of the most important line because
हमारी पहली पूरी एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन दिस इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस. If your graph intersection at one point on x-axis, then it is a linear polynomial. If it intersect at 2 points, then it is quadratic polynomial. And if it intersect at 3 points, then it is a cubic polynomial. Okay, here I have written highest degree 1, 2 and 3. This was to be come here, but due to less space we are writing here done. Now we shall move with our first exercise. Now first exercise, as I told you, is based on this thing, that is intersection on x-axis. This is the point where our first exercise is based. See, I have already drawn the 6 graphs which are given in the textbooks. Now first, if you see this represents a line here, line. Because it represents a line, hence it is linear polynomial. But it do not intersect at any point on the x-axis. मैंने कहा था कि जीरोस तभी पता चलते हैं जब वो x-axis पे इंटरसेक्ट करे. अब ये x-axis पे एक भी जगह पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि नहीं कर रहा तो here zeros will be 0. आपको याद होगा मैंने कहा था कि हमने यहाँ पे वर्ड एटमोस्ट यूज किया है, इसीलिए हमने वर्ड एटमोस्ट यूज किया था कि ये इंटरसेक्शन नहीं कर रहा है. एटमोस्ट 1 का मतलब होता है कि या तो 0 या तो 1. तो योर आंसर इज 0. नाउ सेकेंड नंबर, इफ यू सी दिस इज अ कर्व. ये इस तरह से कर्व जा रहा है, मगर ये एक्स एक्सिस पे एक ही जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है. एक्चुअली क्योंकि ये कर्व है, इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, मगर बिकॉज इट इज कर्व, इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, बट इसके जीरोस कितने हैं? ओनली 1, क्योंकि एक्स एक्सिस पे एक ही जगह पे इंटरसेक्शन कर रहा है. थर्ड पॉइंट, दैट इज थर्ड सम. इफ यू सी दिस इज एक्स एक्सिस, सो नाउ दिस इज इंटरसेक्टिंग एट 1 प्लेस, 2 प्लेस एंड 3 प्लेस. एक्चुअली इट इज अ कर्व. सी ये कर्व है, तो फिर से ये क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल. मगर यहाँ पर जीरोस कितने हैं आपके पास? 3, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे 1, 2 और 3 जगह पर इंटरसेक्शन कर रहा है. फोर्थ नंबर सम, इफ आई सी द फिगर, तो फिगर देखने से मुझे लग रहा है कि दिस इज अ पैराबोला. बिकॉज दिस इज अ पैराबोला, सो नाउ इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. अच्छा, अगर मैं जीरोस की बात करूं तो जीरोस कितने होंगे इसके? देखो एक्स एक्सिस पे एक यहाँ पर इंटरसेक्शन है, एक यहाँ पर इंटरसेक्शन है, 2 जगह पे इंटरसेक्शन है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस आर 2. हियर अगेन सी दिस इज अ कर्व 1, 2, 3. क्योंकि कर्व है तो ये पहली बात तो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल. अच्छा, नंबर ऑफ कर्व्स देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ये तो 4 जगह पे इंटरसेक्शन हुआ है, तो ये क्यूबिक नहीं हो सकता. तो ये है सिर्फ पॉलिनोमियल, और इसके पास जीरोस कितने हुए? 4. तो नंबर ऑफ जीरोस हियर आर 4. सिमिलरली इफ आई सी हियर, देखो इसका कर्व ऐसे बनाया है कि ये एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक जगह पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1, 2 और 3. इट इज इंटरसेक्टिंग एट 3 प्लेसेस. बिकॉज दिस इज अ कर्व, सो आई कैन राइट हियर number of zeros are how much? 3. Hence the answer to be written for these questions are, for first question number of zeros are 0, for second question number of zeros are 1, for third question number of zeros are 3, for fourth question number of zeros are 2, for fifth question number of zeros are 4, and for sixth question number of zeros are 3. So here we have total amount of 3 zeros. Thank you.